डी न्यूज पर। इरान इस्राएल देशयोः मध्ये वर्धितः विवादः। इरान देशेन इस्राएल देशे प्रक्षेपास्त्रेण कृतं बहुधा आक्रमणं। 200 ड्रोन यन्त्रमाध्यमेन कृतः आघातः। येरुशलेम इत्यत्र सायरन् ध्वनिः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः पश्चिमेशियायाः स्थितौ ब्रिटेनस्य विदेशमन्त्रिणा सह कृतवान् संवादम्। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य जन्मजयन्ती अद्य। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः देशवासिभ्यः शुभकामनां प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवने श्रद्धा सुमनांजलिम् अर्पयेत्। भाजपा दलमद्य प्रकाशयेत् स्वीय वचनानां पत्रं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिनः उपस्थितौ ख्यापयिष्यते संकल्पपत्रं। राजनाथ सिंहस्य अध्यक्षतायां 27 सदस्यान्वित समितिना निर्मितमस्ति एतद् घोषणापत्रम्। सामान्य निर्वाचनाय सर्वाणि दलानि अनारतं प्रचारकार्ये संलग्नानि दृश्यन्ते। प्रधानमंत्री मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य होशंगाबाद नगरे, कर्नाटकस्य मैसूर मंगलोर नगरयोः कुर्यात् निर्वाचन प्रचारम्। तत्रैव अमित शाहः छत्तीसगढ़ महाराष्ट्रयोः, राजनाथ सिंहः च बिहारे कुर्यात् निर्वाचन सभाः। लोकसभा निर्वाचन अभियाने विपक्षेण अपि पूर्णशक्त्या क्रियते प्रचारम्। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः अद्य नागपुरे, सपा दल प्रमुखः अखिलेश यादवः मुरादाबादे, अथ च बसपा दलस्य अध्यक्षा मायावती मुजफ्फरनगरे कुर्युः निर्वाचन प्रचारम्। आईपीएल प्रतियोगितायाम् अद्य क्रीडिष्यते स्पर्धाद्वयम्। प्रथमस्पर्धा कोलकाता लखनऊ दलयोः मध्ये, द्वितीया स्पर्धा च मुम्बई चेन्नई दलयोः भवेत्। ह्यः क्रीडितायां स्पर्धायां राजस्थान दलेन पंजाब दलं पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। ईरान द्वारा शनिवासरे चिरं रात्रौ इस्राएल देशे विस्फोटकानां ड्रोन इत्येतेषां दलं प्रवर्तनस्य, प्रक्षेपास्त्राणि च प्रक्षेपणस्य पश्चात् रविवासरे येरुशलेमस्य पार्श्वं विपत्सञ्चेतनध्वनिः गुञ्जितः। बृहद्स्तरे च निष्कासनम् ईक्षितम्। एतद् इस्राएल क्षेत्रे ईरानस्य प्रथमं साक्षात् आक्रमणमासीत्, येन हि विवादेभ्यः महान् समुद्भूतः। भारतस्य विदेशमन्त्री एस जयशंकरः पश्चिमवर्ती एशियायाः स्थितौ ब्रिटेन देशस्य विदेशमन्त्रिणा सह वार्तां विहितवान्। अद्य बाबा साहेबस्य भीमराव रामजी अम्बेडकर वर्यस्य जन्मजयन्ती अस्ति। तस्य जन्म अप्रैल मासस्य 14 दिनाङ्के 1918 जातमासीत्। भारतस्य स्वतन्त्रान्ते देशस्य संविधान निर्माणे तस्य अमूल्य योगदानाय श्रद्धाञ्जलि समर्पणाय इयं जयन्ती मान्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः देशवासिभ्यः शुभकामनां प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवने श्रद्धा सुमनांजलिम् अद्य अर्पयेत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकरस्य जन्मजयन्त्याः पूर्वसन्ध्यायां देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् अस्मत् संविधान निर्माता राष्ट्रनिर्मातृषु अन्यतम विभूतिः बाबा साहेबस्य भीमराव रामजी अम्बेडकर वर्यस्य अद्य जन्मजयन्त्यवसरे अहं समस्त देशवासिभ्यः हृदा शुभकामनाः ददामि। सामाजिक परिवर्तनस्य अग्रे दूतः, बहुमुखी प्रतिभाधनी बाबा साहेबः अम्बेडकरः नियमविद्, शिक्षाविद्, अर्थशास्त्री, समाजसुधारकः, राजनेत्री रूपे च अस्माकं देशे समाजे च असाधारणं योगदानं दत्तवान्। एतदवसरे वयं तस्य आदर्शान् स्वाचरणे आनयेम। स्वदेशस्य च समावेशी विकासाय एकमताः सम्भूय कार्यं कुर्याम। भाजपादलम् अद्य स्वीय वचनानां पत्रं प्रकाशयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिनः उपस्थितो संकल्पपत्रम् अद्य ख्यापयिष्यते। तत्रैव राजनाथ सिंहस्य अध्यक्षयुतया 27 सदस्यान्वित समितिना एतत् घोषणापत्रं निर्मितमस्ति।
सामान्यनिर्वाचनाय सर्वाणि दलानि अनारतं प्रचारकार्ये संलग्नानि दृश्यन्ते। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य होशंगाबादनगरे कर्णाटकस्य मैसूर-मंगलूरुनगरयोः निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। तत्रैव अमित शाहः छत्तीसगढ़ महाराष्ट्रयोः, राजनाथ सिंहः च बिहारे कुर्यात् निर्वाचनसभाः। लोकसभा निर्वाचनं लक्ष्यीकृत्य भाजपादलस्य प्रचारः गतिमान् अस्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे अद्य भाजपादलस्य दिग्गजः प्रभावी प्रचारकः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः बिहारस्य बांका जमुई इत्यनयोः स्थानयोः निर्वाचनपराः जनसभाः सम्बोधयेत्। अवधेयं यत् बिहारस्य 4 आसन्देषु प्रथमचरणे मतदानमस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री YSRCP इत्येतस्य अध्यक्षः YS जगन्मोहन रेड्डी शनिवासरे रात्रौ विजयवाडायाम् अजीत सिंह नगरे प्रस्तरैः आक्रान्तः। एतस्मिन् असौ क्षतग्रस्तः अभवत्। चिकित्सकाः तत्कालमेव सर्वयाने तस्मै प्राथमिकोपचारं दत्तवन्तः। क्षतग्रस्तप्रहारान्तारेऽपि मुख्यमन्त्रिणा स्वसर्वयानयात्रा प्रवर्तिता। उच्यते यत् कार्यक्रमे जगमोहनस्य स्वागतं क्रियते स्म। तत्समर्थकाः विशालमालाम् आनीतवन्तः आसन्। तस्मै क्रेन् इत्येतत् प्रयुज्य तस्मै मालाधारणं कार्यते स्म। एतदवसरे केनापि प्रस्तरप्रहारः कृतः। घटना मेमन्था सिद्धं यात्राकाले तदा अभवत् यदा सः विशेषप्रचारः सर्वयाने उत्थाय जनाभिवादनं स्वीकरोति स्म। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः YS जगन्मोहन रेड्डी इत्येतस्य भद्रस्वास्थ्याय चिरेण च स्वास्थ्यम् अवाप्तुं प्रार्थनां कृतवान्। एक्स नामके सामाजिकपटले प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् अहम् आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः शीघ्रं स्वस्थं भवितुं सुस्वास्थ्याय च प्रार्थनां करोमि। तमिलनाडु राज्यस्य कन्याकुमारी इत्यत्र भाजपादलस्य प्रत्याशिनः समर्थने भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाहः मार्गप्रदर्शनयात्रां कृतवान्। एतस्मिन् अवधौ तेन जनाः सम्बोधिताः। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्री मोदी तमिलभाषाम् अथ च संस्कृतिगौरवं देशे विदेशे वर्धनार्थं कार्यं कृतवान्। अमित शाहः DMK दले सनातनविरोधी रामविरोधी अस्ति इति आरोपितवान्। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। DMK पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है। भाजपा दलाध्यक्षः JP नड्डा गतदिवसे नागालैंड राज्ये एकां निर्वाचनजनसभां सम्बोधितवान्। नड्डा उक्तवान् यत् कांग्रेस दलेन दशकेभ्यः नागालैंड राज्यस्य उपेक्षा कृता आसीत्। सः कांग्रेस दले केवलं मतदानस्य राजनीतेः आरोपं कृतवान्। कांग्रेस had a policy of वोट पाओ और भूल जाओ। Get the votes and forget them, forgive them and forget them. भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट। बिहार राज्ये राष्ट्रीय जनता दलेन लोकसभा निर्वाचनाय स्वीय घोषणापत्रे देशे प्रतिवर्षं 1 कोटिमित प्राशासनिक वृत्तयः अथ च निर्धनपरिवाराणां महिलाभ्यः प्रतिवर्षं 1 लक्ष रूप्यकाणि प्रदातुं वचनबद्धतां प्रकटिताम्। राष्ट्रीय जनता दलस्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादवः अथ च दलस्य अन्य वरिष्ठ नेतृभिः पटनानगरे परिवर्तनपत्रं नामाख्यं दलस्य घोषणापत्रं ख्यापितम्। दलेन वचनं प्रकटितं यत् इंडी संयुतिः यदि सत्तायाम् आगच्छति चेत्
बिहारं विशेषराज्यत्वेन भविष्यति इति घोषणापत्रे 24 जनवचनानि पूरयितुं प्रतिबद्धता तत्र प्रकटिता। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। लोकसभा निर्वाचनार्थं कांग्रेस दलस्य प्रचाराभियानम् अनुवर्तते। दलस्य नेता राहुलः गान्धी छत्तीसगढ़े बस्तर जनपदे जनसभां कृतवान्। तेन कांग्रेस दलस्य निर्वाचनपराणि वचनानि विषये उक्तवान्। तो हम एक नई योजना लाए, चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी। दिल्ली मद्यनीति प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य वादनिर्णयं विरुध्य अरविंद केजरीवालस्य याचिकायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशयोः संजीव खन्ना दीपांकर दत्ता इत्यनयोः पीठम् आगामि सोमवासरे वादश्रवणं कुर्यात्। मद्यनीति भ्रष्टाचार प्रकरणे दिल्ल्याः उच्च न्यायालयः प्रवर्तननिदेशालयेन निगडनं विरुध्य केजरीवालस्य याचिका निरस्ता आसीत्। तेन उक्तं यत् प्रथमदृष्ट्या प्रवर्तननिदेशालयस्य आरोपेषु तथ्यानि दृश्यन्ते यत् मुख्यमन्त्रित्वेन विशिष्टमद्यनिर्माणिभ्यः लाभं गमयितुम् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य च मुख्य संयोजकत्वेन आभिः निर्माणिभ्यः लब्धराशेः गोवा विधानसभा निर्वाचने प्रयोगे केजरीवालस्य महती भूमिका आसीत्। अधुना एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।